हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर ओवर हो चुका है और अब हम चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचे हैं, विच इज़ पोलिनोमियल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट डू मीन बाय पोलिनोमियल. वैसे आप 9th क्लास में इस पोलिनोमियल्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से इस पोलिनोमियल की डेफिनेशन और इसको समझा रहा हूँ. मैं इस पोलिनोमियल के डेफिनेशन को यहाँ लिखूँगा नहीं, केवल रीड आउट करूँगा और इसको नोट्स में आपको सेंड कर दूँगा ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर लें, अच्छे से समझ लें. सो पोलिनोमियल. Polynomials. The combination of constant and variable and the power of the variable are natural number, that is integral. It is denoted by p of x and defined by p of x is equal to a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 plus dash 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 an. Clear? So this is our polynomial. So एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, polynomial कुछ भी नहीं है. Polynomial is a combination of constant and variable and the power of the variable are natural number. इनकी जो n ये पावर है, ये n, n minus 1, n minus 2, n minus 3, these are the power of variable which is natural number. इनकी वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, और इंटीग्रल होनी चाहिए. इंटीग्रल का मतलब नॉन नेगेटिव और नॉन डेसिमल नंबर्स होने चाहिए. मतलब n की वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है. n-1 की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, मतलब इनकी वैल्यू इंटीग्रल होगी. इसका मतलब पॉइंट भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकती. क्लियर? सो दिस इज अवर पोलिनोमियल where a0, a1, a2, a3 dash dash an are constants and also known as coefficients of different power of x. Clear? And x are variable. Clear? So a0 is a coefficient of x to the power n, a1 is coefficient of x to the power n minus 1, a2 is a coefficient of x to the power n minus 2 and so on. Clear? अब आपके माइंड में ये चीज आ रही है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल. सो सिंपल है. कांस्टेंट दैट मीन्स फिक्स क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, कोई भी नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं. दीज आर द कांस्टेंट्स. क्लियर? दूसरी बात है वेरिएबल. वेरिएबल क्या है? चेंजेबल क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड. ठीक है, दीज आर द वेरिएबल्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स. सो इसकी डेफिनेशन ये है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच अकरिंग इन पोलिनोमियल. यानी कि किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हो, उसे उस पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हमने जो पोलिनोमियल लिया है p of x इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस, ठीक है, a3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डैश 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 an. ठीक है, द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज n. क्यों? क्योंकि इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? n है. सो दिस पोलिनोमियल इज n डिग्री पोलिनोमियल. क्लियर?
Next topic is types of polynomial. Polynomials. Types of polynomial depends on degree of polynomial. मतलब जब हम n की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो वी कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. क्लियर? उनकी नेमिंग अलग अलग है, मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले फर्स्ट है कांस्टेंट पोलिनोमियल. कांस्टेंट पोलिनोमियल. देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे मिलेगा? इफ वी आर पुटिंग n इक्वल टू 0 इन दिस n degree polynomial, then polynomial p of x becomes a0 x to the power 0. आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि a1 x की पावर n माइनस 0 सॉरी 0 माइनस 1 दैट मीन्स नेगेटिव पावर आ जाएगी. सो वी हैव टू eliminate this term, so only we can get the polynomial a0 x to the power 0, x to the power 0 that means 1. So a0, this is the constant polynomial. This polynomial is also known as a 0 degree polynomial. अब इस constant polynomial के examples कैसे हो सकते हैं? Examples ले सकता हूं मैं p of x इक्वल टू, जैसे 2 ले लिया मैंने, p of x इक्वल टू मैंने माइनस 3 ले लिया, p of x इक्वल टू मैंने माइनस 10 ले लिया. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल. एक बार फिर से देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल. सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि जो हमने डिग्री पढ़ी है n उसके ऊपर डिपेंड करता है. हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ n पुट करेंगे, वी कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स. सो वी आर पुटिंग n इक्वल टू 0 इन दी our given polynomial p of x equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1. So we are putting here n equal to 0. So a0 x to the power n, that means 0. a1 x to the power 0 minus 1. Next term similar. So p of x equal to a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 0 minus 1. So this becomes negative because x to the power negative never will come, because the power of the variable are integral. So we don't take this term, so only we are taking this first term. So a0 x to the power 0, so x to the power 0 that means 1. So p of x equal to a0. This is the constant polynomial, and we can also say that this is the 0 degree polynomial. Clear? अब हम इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा? ये एक कांस्टेंट ग्राफ होगा, यानी कि कांस्टेंट लाइन होगी. इसको हम लीनियर लाइन भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे अपन ये ग्राफ की बात करते हैं, इस p of x इक्वल टू 2 पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो इसका ग्राफ होगा, ये 1 है, ये 2 है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस p of x इक्वल टू 2. Similarly, we can draw the graph of p of x equal to minus 3. We can draw also the graph of p of x equal to minus 10 also. Clear? Next, linear polynomial. Linear polynomial. If we are putting n equal to 1 in that previous polynomial, so we can get p of x equal to c a0 x to the power 1 plus a1 x to the power 1 minus 1. और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? x to the power नेगेटिव आएगी. सो वी आर नॉट टेकिंग. सो a0 x plus a1, यदि मैं इस a0 को a से रिप्लेस कर दूं और b1 को a1 को b से रिप्लेस कर दूं, सो हमारा पोलिनोमियल कैसे बनेगा? सो आवर पोलिनोमियल p of x इज इक्वल टू ax plus b. So this is the general form of linear polynomial. Is also known as 1 degree polynomial. Clear? Where a is coefficient of
x and b is constant term. क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2x प्लस 5 और लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 और मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 3. So these are the examples of polynomial. The graph of linear polynomial is also a straight line. That's why we call this is the linear polynomial. Correct? Next, quadratic polynomial. If we are putting n equal to 2, then polynomial p of x becomes a0 x to the power 2 a1 x plus that means 2 minus 1 और a2 x to the power 2 minus 2 और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. सो p of x is equal to a0 x square plus a1 x plus a2 only. Now we are replacing a0 by a1 by b or a2 by c. So it becomes p of x equal to ax square plus bx plus c. This is the general form of quadratic polynomial. बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर देख सकते हैं a is coefficient of x square, b is coefficient of x और c is constant term. क्लियर? अब इनके ग्राफ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ और उससे बाद आने वाले जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उनके ग्राफ हमेशा कर्व फॉर्म में होंगे. इनकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ भी कर्व फॉर्म में होगा और इसके बाद आने वाले जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उनका भी ग्राफ क्या होगा? कर्व फॉर्म में होगा. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. सो p ऑफ x इज इक्वल टू जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 या p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. p ऑफ x इक्वल टू हम ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस 10 इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5 इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्लियर? नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल. Cubic polynomial. If we are putting n equal to 3 in above polynomial, so p of x is equal to a0 x to the power 3 plus a1 x to the power 3 minus 1 plus a2 x to the power 3 minus 2 और a3 x to the power 3 minus 3. So it becomes p of x is equal to a0 x to the power 3 plus a1 x square plus a2x plus a3 only. We are replacing a0 by a, a1 by b, a2 by c और a3 by d. So p of x becomes ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the general form of cubic polynomial where a is coefficient of x cube, b is coefficient of x square, c is coefficient of x और d is coefficient of
सॉरी कांस्टेंट टर्म, sorry constant term, no. D is coefficient of D is constant term, clear. A is a coefficient of x cube, B is a coefficient of x square, C is a coefficient of x, or D is a constant term. Now example of this type of polynomial. So p of x equal to 2x cube plus 3x square plus 4x plus 10. This is the example of cubic polynomial. Again we can take, so 2x cube is example of cubic polynomial. Now next polynomial is biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. If we are putting n equal to 4, so p of x becomes a0 x to the power 4, a1 x to the power 3, a2 x to the power 2, a3 x plus a4. This is the biquadratic polynomial. We are replacing a0 by a, a1 by b, a2 by C, a3 by D, or a4 by E. So p of x, ax to the power 4, bx cube, cx square, dx plus E. This is the biquadratic polynomial. Example of this type of polynomial is p of x equal to 4x की power 4, 3x square plus 4x plus 10, p of x equal to x की power 4, x cube, x की power 2, x plus 1. Here a, b, c, d, e. So a is coefficient of x to the power 4, b is coefficient of x to the power 3, c is coefficient of x to the power 2, d is a coefficient of x, or e is constant term. इतना आपको समझ में आ गया होगा. इसको एक बार रीड कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.